So warm welcome everyone here. Is it my voice is clear? Yes, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will start our lecture. Here I'm sharing my screen. Just let me know whether you can see my screen or not. Yes? Is it possible? Yes, sir. If you all remember that I have given you the assignment of last lecture where we did the expression of electrical potential due to electric dipole. Am I right? So, what was the potentials you have obtained along axis, equator, and at 60 degree? Can anyone tell me? Yes, what was the potential you have obtained along axis? Yes, anyone? What was the expression you obtained for the axis? Cos theta. Cos theta? No, I'm asking what expression you obtain when you have substitute theta equals to 0 degree for the electrostatic potential at a dipole. 4 by epsilon naught r square. Sorry, pardon, can you repeat? Your voice was muffled. Can you repeat again? Hello, am I audible or not? Can you hear me? Yes. Okay, yes. Can you repeat what was the potential you have obtained for the v-axis? Here we are talking about the dipole axis. We have drawn one imaginary line which is passing through both the poles. Okay, and around that we have considered one point, and around that point, what was the potential must be present. So, anyone got any expression regarding about the axis? No one? P upon 4 pi epsilon naught r square. Okay, let's see. What was our initial formula for the potential of a dipole? Yes, can anyone repeat that potential formula? जो dipole के लिए मिला था. That is BC equal to, yes, P cos theta upon 4 pi epsilon r square. very good. Shabash. P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. Obviously, when you will going to substitute the value of theta as 0, cos 0 will be 1, and you are going to obtain equation called P upon 4 pi epsilon naught r square. This is the potential present along the dipole of an axis. Then, if you substitute theta as 90 degree, and this is the equatorial, okay, this is the equatorial region. So obviously, student, cos 90, yes, 0. cos 90 is 0. exactly. Cos 90 0 ultimately makes this entire expression 0. That's why Yes. the potential at equator must be 0. Then, my dear student, tell me if we can going to obtain the potential at 60 degree. So here V at 60 degree must be, yes, any idea? P cos 60 degree upon 4 pi epsilon naught r square. What is the value of cos 60? 1 by 2. 1 by 2? Are you sure? Yes, anyone? What is the value of cos 60? Yes, 1 by 2. Am I right? So, P into
1 by 2 upon 4 pi epsilon naught r square. This 2 must go on the denominator and you will be get P upon, yes, anyone? 8 pi 8 epsilon r square. pi epsilon naught r square. Shabbos. So this can be the potential. Please remember, in most of the competitive exam, they are asking the potentials at the variable degrees. So you should going to remember how we can calculate the potential of the varying, okay, the displacement of point P. So there will be only they going to mention you the angle. Okay, so according to that angle, you have to just change the theta value and you will be get the corresponding potential at those angles. So this is what basically the part we have gave you for the assignment purpose. Okay. Now, today, what we will going to see is equipotential surfaces. Okay. Equipotential surfaces. Equipotential surfaces. What do you mean by equipotential surfaces? The surface at which you will be get the constant potential or the same potential, such a surface are called equipotential surface. In simple language, ऐसा surface जहां पे आपको हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम मिलेगा तो उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. Basically, this concept is regarding about the three-dimensional geometrical space. Okay, इसलिए इसको surfaces बोला है. Okay, so here whatever the equipotential surface we can represent, that is in terms of 3D. Okay, so here we have to imagine ourselves that we are looking that equipotential surface in a 3D form. It's not like a 2D form, only the plane surface we are just observing. Here we are actually trying to observing the three-dimensional space of a surface. So the equipotential surface is nothing but the surface at which the potential will be getting constant or same. So such a surface is called equipotential surface. Okay, is it clear everyone? Equipotential surface का मतलब समझ में आ गया कि क्या होगा? Equipotential surface होगा कि ऐसा surface जिसके पास अगर आप एक पॉइंट पे जाओगे तो वो सारे पॉइंट पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता कैसे, मींस हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे कैसे? तो चलो इसके लिए मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल वांट टू डू इज सी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप किसके अराउंड फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किसके अराउंड होता है? तो ऑब्वियसली चार्ज के अराउंड होता है. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज ले लेता हूं. ये देखो, हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल चार्ज लगेगा. वी नीड वन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड ये आ गया यहाँ. क्या करते हैं, सी एक पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को मिल गया, थोड़ा डायमेंशनली बहुत बड़ा है. तब एक काम करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं. ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. वी कैन इजीली रिप्रेजेंट इट दिस. So see everyone, here we have one positive charge. अपने पास एक positive charge है. ठीक है everyone, is it my screen is visible properly? Yes, sir. Yes. Okay.
Now, student, our discussion is going to be start with just assuming one single point charge. Okay, this is positive charge right now in front of us. Okay, अब क्या करेंगे पता है? We know already this positive charge has its own electric field lines. Okay, do you know now what do you mean by electric field lines? Electric field lines are imaginary lines which are representing the electric field of a particular charge. मतलब ऐसे imaginary lines जो उस charge के field को represent करते हैं, that is called okay field lines. So let's show this is basically one of positive charge, okay, whose electrical field lines can be representing like this. ऐसे electrical field lines इस positive charge के okay travel करेंगे in outward direction. See, so this is the electrical field lines of positive charge. Okay. Does anyone know where is the directionality of this electric field must be in case of positive? Radially outward. Radially outward. Radially outward. Very good. Radially outward. एकदम सही. तो देखो, this is the electric field lines of this prospective charge. ये जो positive charge है ना, इस positive charge का ये electric field lines है, जो कि radially outward जा रहा है. ठीक है? Is it clear everyone? यहाँ तक आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Now, see student, as we all know, these field lines represent the electric field of the particular charge. जैसे कि अगर ये जो field lines है, ये field lines किसको represent करेंगे? ये field lines इस positive charge को represent करेंगे. Okay, whatever the surrounding region, ये जो surrounding region है, ये surrounding region में जो electric field है, that electric field is only due to these field lines. ये field lines की वजह से यहाँ पे electric field है. Are you getting it everyone? Clear है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. Okay. Now, अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग. Let us say assume here I will be going to consider say one point over here. देख मैं यहाँ पे एक point ले लेता हूँ. Okay. And I'm just going to say कि I am moving just little bit away from this positive charge along this direction. Along this direction, I'm just moving little bit away from this positive charge. At this point, maybe I'm going to get the potential of this point, say 10 volt. मैं जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ तो मुझे पोटेंशियल मिल रहा है इस चार्ज के वजह से, that is 10 volt. If suppose I will move on this region, again I will going to get the 10 volt. If I'm going to move it on this region again I will going to get the 10 volt. ठीक है? So अगर मैं ऐसे इसी circumference से, if I'm going to moving on the same circumference over here, see over this region of electric field, इस region के ऊपर मैं electric field के अगर मैं travel करता हूँ तो मुझे हर जगह पे 10 volt इतना potential मिल रहा है. I'm just assuming here I'm just saying I'm getting this 10 volt just 2 centimeter away from the charge. 2 centimeter में थोड़ा सा चार्ज से दूर चला गया तो there I will be going to obtain the 10 volt potential. ये वो जो point है ना, इस point का potential 10 volt है. I'm just assuming everything. I'm not saying these are the standard values. I'm just assuming that this is kind of a potential must be present. Now, suppose if I move more 2 centimeter further away from the same point charge, like here, at this point, say at this point, I will be getting somewhere say 9 volt. यहाँ पे कुछ 9 volt मिल रहा है. अगर यहाँ पे भी मूव करूंगा तो सिर्फ 9 volt ही मिल रहा है. यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो भी 9 volt मिल रहा है. तो यहाँ पे भी 9 volt, यहाँ पे भी 9 volt, यहाँ पे भी, यहाँ पे, here, at this point, at this point, at this point, and as well as at this point also I'm getting the
9 volt. ठीक है everyone? But here right now you will be observing the potential gets yes increase हुआ कि decrease हुआ? Decrease. एग्जैक्टली पोटेंशियल डिक्रीज हो गया. अभी आप बोलोगे सर क्या आपने यहाँ पे अपने मन से ये पोटेंशियल को डिक्रीज किया है? मींस यू आर जस्ट गोइंग टू बी अज्यूमिंग कि यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है. सो नो स्टूडेंट, according to the theory, whenever you will be moving away from the charge, the electric field strength goes on. Yes, electric field strength क्या होता है? Decreasing. वेरी गुड, डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे मुझे यही तो दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मैं 2 सेंटीमीटर इससे दूर जा रहा हूँ, हियर आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द पोटेंशियल इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीजिंग. ऑब्वियसली तो यहाँ पे 9 वोल्ट मिल गया. अब नाउ स्टूडेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू बी से राइट नाउ नियर टू द चार्ज, बट आई हैव जस्ट मूव इट से आई कैन से बहुत ही दूर चले जाते हैं. यार व्हाट इज द फारेस्ट डिस्टेंस आई कैन टेक? This is a very farthest distance right now I am taking here, which is exactly at the edge of the electric field. Okay, this is what the farthest distance where I am obtained somewhere 5 volt. Okay, 5 volt when I consider earlier. So if I move in the same sense, here also I am getting 5 volt, here also I am getting 5 volt, here also I am getting 5 volt, and same. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. That's it. तो अगर आप इस फील्ड लाइंस के ऊपर इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑन दिस स्पेसिफिक say point which is actually going to form a circular plane or the circle, you will be obtaining the same potential. I will be going to start say representing this by okay initially by the dot, but now what I'm going to do, I will be going to join these lines which are present on the electric field lines. Okay, which are present on the electric field lines. So what I will going to do, I'm going to just complete these points and I'm just going to connecting these points like your okay, हम लोग इसको यहाँ पे लेके चलते हैं. इसको यहाँ पे इसको रख देते हैं. ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाते हैं. इसको थोड़ा इसका लेंथ कम कर लेते हैं. इसको करते हैं मूव. ये देखो, now what I'm going to do is I will be keep this compass, okay, this edge exactly at the center. Oh, sorry. इसको कर दिया यहाँ पे छोटा. इसको मूव करना मेरे को. ये रख दिया सेंटर पे चार्ज के. Okay everyone, is it clear? Yes, can you see this? Yes. Okay, now what I'm going to do, see. Okay, look at carefully. Here, I will be going to draw. Okay, I will be going to draw this. Okay, अब हम लोग क्या करेंगे पता है? What I'm going to do is I will be going to draw a circle which will be obtained by just joining these lines. Okay, यहाँ से ये देखो C. दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा बाहर चला गया. Similarly, here what I can do, I will join these lines also. ये भी लाइन, ये देखो, यहाँ से इसको भी जोड़ दिया. I don't think so. This will go more. नहीं होगा. ठीक है, नहीं होगा ये. ठीक है, no problem. Okay. So here, student, you will be getting
I have joined all the points which I have marked over here. Like for example, for 10 volt, 9 volt, and this must be a 5 volt, which is the outer surface. This can be like extended. So now student, here I am getting the circular region or the circle which is going to connect all the points where I had obtained the same potential. So now student, the surface of the circle is going to be known as equipotential surface, which means if I'm going to move on this circular region anywhere, okay, anywhere I can going to get the same potential. That's why I will call this as equipotential surface. But as I have mentioned here, it is a 3D surface, which means you have to just consider this is not a plain circle. You have to make this as a three-dimensional geometry. That's why you have to assume this circle will going to form a sphere. And that spherical region, that spherical surface will be going to enclose the charge. And if you will going to move on that circular, say the spherical region surface, everywhere you will obtain the same potential. इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, अगर आप इस सर्कल को ऐसे इमेजिन करो कि इसको आप एक स्फीयर बना दो, तो ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर के अंदर क्लोज हो जाए। तो वो जो स्फीयर के ऊपर का सरफेस एरिया होगा, वहां पे आप कहीं पे भी जाओ, every wherever you will go, you will get the same potential. That surface is called equipotential surface. इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर समझो मान लो कि इसको भी अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे ना, if I'm going to connect this also, so I will be get one circle, okay, around the positive charge, okay, इसको तो हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, लास्ट वाले को भी कनेक्ट कर दिया. So these are circles, nothing but the equipotential surfaces. But here you have to imagine those surfaces in the 3D model. That's why you have to just assume that this is not a circle. This is what basically the sphere and spherical region. That spherical region going to enclose the charge, okay, of a different potential. But student, let me tell you, if you will move on the surface area of this any respecting sphere, you will be get same potential everywhere. Like for example, अगर आप ये जो बड़ा सर्कल है इसका स्फीयर इमेजिन करते हो, तो उसके सरफेस के ऊपर कहीं पे भी जाओगे तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा. तो वी विल कॉल दैट सरफेस एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. लेट मी टेल यू हाउ इट लुक्स. यस, कैसे दिखेगा ये देखो. तो ये देखिए, सी. So this is what a three-dimensional surface, okay, sphere. I will be going to put on this. इसके ऊपर रख दिया. तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, this is three-dimensional spherical region. On this spherical region, if you will go anywhere, कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो you will get the 10 volt. Okay. अगर इसके बाद में आप एक काम करते हो कि next spherical region लेते हो, जो कि आपका 9 volt है. See. Now, if you go anywhere, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां पे आपको 9 वोल्ट मिलेगा. और अगर आप लास्ट वाले सर्कमफेरेंस को एज अ स्फीयर इमेजिन करते हो, तो क्या करना पड़ेगा? सी व्हाट यू हैव टू डू. सी नाउ दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 5 वोल्ट. ये हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 5. इज इट क्लियर एवरीवन? तो कहीं पे भी जाओ, wherever you will go, कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा. So this is the concept of equipotential surfaces. Understood everyone? Yes. Yes, sir. तो ये देखो, मैंने ये जो 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बाजू में निकाल कर, एक्चुअल में ऐसा दिखेगा. 3D वे में ये ऐसा दिखेगा, 2D में ये ऐसा दिखेगा. 3D में you will be assuming it is a sphere. 2D में you will be assuming it is nothing but a circle. But here we have already mentioned it is the three-dimensional surface. That's why you have to assume this is a spherical region, okay, which is going to enclose the charge. So ये होगा आपका equipotential surface. Clear है यहाँ पे सबको? This is called equipotential surface. Yes everyone, clear है यहाँ पे?
equipotential surface? Yes, sir. Yes, anyone have any doubt or any difficulty part which you have not understood? Please ask. This is called equipotential surface. Okay. Yes. Anyone have any doubt? Any difficulty और कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया? स्टूडेंट आप पूछ सकते हो, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. Okay, shall I proceed for the next part? Yes, sir. Yes. Now, okay. Now, see student here. If you observe carefully in this diagram, you will be seeing here the equipotential surface for this region, where I'm talking about this region of 10 volt and 9 volt. I have drawn those region very close to each other. Am I right? ये जो 10 volt है, इसी के बाजू में 9 volt बना है, बराबर है? Is it clear, everyone? ये जो 9 volt है, इसी के मतलब ये 10 और 9 volt के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. But you will be get the 5 volt और जो 10 volt और 9 volt के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. Now why this difference is going to arise? ये डिफरेंस क्यों इतना क्लियर हो गया? Why this difference is going to clear? मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका 5 वोल्ट का चार्ज से बहुत दूर है, whereas 10 वोल्ट और 9 वोल्ट बहुत ही नजदीक है. I can say they are very close to each other. Even they are close to the charge as well. So why this is going to be happening? ये ऐसा क्यों हो गया? So इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? What I am going to do? Let's consider say any positive charge. एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं. आप लोगों को दिख रहा है टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे लिया? Can you see here? Yes, sir. आप लोगों को पता है ना टेस्ट चार्ज कौन होता है? What do you mean by test charge? The charge who is positive in nature, correct? And we are using that for analyze the field. Field को analyze करने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को लेते हैं. Is it clear everyone? Yes everyone, clear है यहाँ पे हम लोग ने टेस्ट चार्ज कौन सा लिया है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. Now student, let's recall your basic concept. If I'm going to put a positive charge over the 10 volt region, जो 10 volt region के पास मैंने रखा है पॉजिटिव चार्ज को, जो कि अपना टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज अपने सेंट्रल चार्ज से बहुत ही नजदीक है. Can I say it is very close to the test charge and the central charge? The distance between them is very minimum. Yes. Yes. Now Yes, tell me what is going to be happen between them. What kind of a force will be acting between them? Repulsion. Repulsion force. Exactly, force of repulsion लगेगा इसके बीच में. तो देखो क्या होने वाला है. See student, what is going to happen? The force of repulsion try to push away this test charge, okay, into the another potential region. देखो आप देख सकते हो इसको यहाँ से ये मूव करने की कोशिश करेगा. ये देखो इधर पहुंचा दिया इसने. Are you getting it everyone? यहाँ से इसको यहाँ पे पहुंचा दिया. मतलब जो अपना टेस्ट चार्ज था ना, पहले टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, अब टेस्ट चार्ज को उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट पोटेंशियल रीजन में शिफ्ट कर दिया. That we all know due to force of repulsion. Am I right everyone? यहाँ पे था, Yes. है ना. सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे यहाँ पे था, यहाँ पे ढकल दिया उसको, फट से ढकल दिया, मतलब यहाँ से फट से पुश कर दिया. Now let's think about it. What will be the potential energy at this point? Potential energy कितना होगा? What was the potential energy? Maximum या minimum? Potential energy कितना होगा इस region के पास? Yes. What will be the potential energy at this region? यहाँ पे कितना potential energy होगा? Just give me like answering maximum, minimum पे. Maximum होगा, minimum होगा? No one? अच्छा, question is what? Can I repeat again? My question is, if any test charge is kept near the region which is close to the charge, okay, central charge. What? Yes, maximum. क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या है, ये जो फील्ड लाइंस है, यहाँ पे आप क्राउडनेस देख सकते हो. Here you can see the crowdness of a field lines. That's why the potential energy at this region is maximum. Now student, you will be observing this central charge will start throwing away this test charge into the another potential region.
तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? यस, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट एवरीवन? Yes, sir. So now what is happening, as the potential energy is greater, the same kinetic energy is also going to be obtained greater, and with the greater kinetic energy, that test charge will be thrown away into the another potential surface or into the another potential region. And now student, here what is going to happen, as the test charge is moving away from the our source charge or the central charge, as it keep on goes on away from the test charge or from the central charge, the potential start decreasing, because potential energy is also going to start decreasing. तो यहाँ से यहाँ पे इसको जाने को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, और दूर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी और भी मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट, wherever the last potential surface you will be obtained, it is very much far away from the center charge. Also, it will be very much away or far away from the other potential surfaces. जैसे कि ये जो 9 वोल्ट और 10 वोल्ट का सरफेस है ना, इससे थोड़ा दूर ही जाके ये 5 वोल्ट का सरफेस बनेगा। So यहाँ पे ये इतना दूर क्यों बन रहा है? Why it is going to be making very far from the, say, the center charge? Because as the point charge or the test charge goes away, okay, so the potential energy is going to start decreasing, and due to that, your equipotential surface is also going to be made very far from the test charge or from the positive charge. So this is the reason, student, why these two surfaces are very close and why this final surface is very far away. So student, this is the concept of equipotential surface. Now, can anyone tell me what do you mean by work done? आपके according work done क्या होता है? Yes, what do you mean by work done? Yes, student, anyone? What do you mean by work done? Am I audible? Yes, sir. Okay, so what do you mean by work done? Anyone? Force or energy applied at the point. One by one बताओ. Yes. Yes, tell me. What do you mean by work done? Okay, just tell me the expression of work done. Work done is equal to Force into displacement. force into displacement. Very good. Force into displacement. Okay. Whether it is a scalar multiplication or vector multiplication. Scalar multiplication है या vector multiplication? Work done. Yes. Scalar multiplication है या work done या vector multiplication? See, answer is on your screen only. Vector. Vector multiplication. Anyone? Scalar multiplication है student. Why I am going to tell you? Because see, the dot product is always be scalar multiplication. मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर मिलेगा. Are you getting it? Work done क्या है? स्केलर है ना? Yes, sir. That's the thing. Okay. So please remember, the dot product is always be the scalar multiplication. मतलब जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट आता है, दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और आंसर आपको स्केलर आएगा. हाँ, अगर मान लो ऐसा होता है, let's see if you have this kind of equation. So now this is what? Yes. Vector. Vector multiplication where r cross f बराबर r Cross product. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट. वेरी गुड. तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो भी एक वेक्टर है. इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? टॉर्क ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हाई दीस आर द स्केलर एंड वेक्टर? बिकॉज़ देयर मल्टीप्लिकेशन इज इन द टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. तो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर स्केलर आएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर वेक्टर आएगा. सो दिस इज द रीजन व्हाट यू विल गेट द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट.
Okay, now in our case let's assume, चलो assume करते हैं. देखो अगर मैंने ऐसा बोला था आप लोगों को कि I was initially at this point, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, can you see here? Yes, sir. Okay, I'm right now here at position A. मैं position A पे हूँ on the 9 volt region, 9 volt equipotential surface पे हूँ A point पे. अब मैं क्या करने वाला हूँ? See, look at carefully, everyone. Now I will be going to displacing on the same equipotential surface and just stop at this position where the new position is B. So the initial position was A and now the final position is B. But you will be observing here I am displacing through A to B. Am I right, everyone? Yes, sir. Okay, now, very good. Now, in this case, what is the potential at A? I can write down potential at A is VA. मतलब A point पे potential कितना है? VA. When I'm going to move towards B, now the potential will be VB. Correct, everyone? Yes. Okay, very good. Now, everyone, you know the change in potential, the change in potential will going to give you the work done. Am I right? Yes. Potential का difference will be going to give you the work done. बराबर है? W is equal to VA minus VB. Work done हो गया ना यहाँ पे? Yes, sir. नहीं समझा? वापस बताओ. Yes, sir. अच्छा, वापस एक बार देख लो आप लोग. ए पॉइंट पे है तो पोटेंशियल VA है. थोड़ा सा उसी रीजन के ऊपर से चले गए, मतलब जस्ट मूव इट ऑन द सेम रीजन. ओके, आई एम जस्ट डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स B. नाउ द पोटेंशियल विल बी VB, बट यू विल गेट where I am moving from A to B, which means I am displacing. So the displacement into the force whatever is acting on the point which is going to shifting the point from A to B will be nothing but showing the work done is going to be done. This is what the work done is happening, but this work done is nothing but the difference in the potential. Am I right, everyone? Yes, sir. पक्का ना? श्योर ना? आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया कि यहाँ पे ये WAB मतलब वर्क डन बिटवीन A to B is nothing but the difference in the potential. Are you getting it, everyone? अच्छा, एक काम करते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल. सी, लिसन केयरफुली. छोटा सा एग्जांपल. दिस इज पॉइंट A, this is point B. If I am going from say A to B in this path, I can go A to B by this path. Also, I can go A to B by this path. Okay. So obviously, this point A and this point B has some potential or has some the values. So whatever the work done is going to happen, that work done is nothing but the change in the position from A to B. अगर A to B अगर आप displace हो गए तो work done हो गया, ऐसे हम लोग बोलेंगे. So the same thing will be happen in that case also. Here you are moving on the equipotential surface at point A to B. That's why the change in potential, barabar, change in potential is equal to work done. But now, student, if you clearly observe, what was the value of potential at A? A पे कितना potential है? 9 volt. 9 वोल्ट. अरे वाह, क्या बात है, 9 वोल्ट है, बहुत अच्छा, 9 वोल्ट है. अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? See, I am moving on the same equipotential surface at point B. अब point B पे कितना पोटेंशियल है? 9 volt. 9 वोल्ट ही है, बराबर 9 वोल्ट ही है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट आपको क्या दे देगा? 0. तो यहाँ पे what I can going to conclude from this? क्या conclude करेंगे हम लोग इसके ऊपर से? Work done on the same axis is equal to 0. Very good. The work done on the same equipotential surface must be 0. मतलब अगर आप equipotential surface पे कितना भी चक्कर मार लो, आपका work done हमेशा 0 ही माना जाएगा.
आर यू गेटिंग इट? मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर घुमा रहे हो तो उसका वर्क डन अल्टीमेटली जीरो रहेगा। बट अगर ऐसा हो जाता है, अगर समझो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि अगर आप इनिशियली इस पॉइंट को यहां पे रखते हो, ओके, और इसको बोल देते हो ए, इसको बोलते हो ए। So this is the point A where you will be get potential VA बराबर है। Yes student, can you see point अभी कहाँ? Yes. Okay, now what I am going to do, I will be shifting this point from one of the equipotential surface to the another equipotential surface। मतलब एक equipotential surface से दूसरे equipotential surface पे इसको shift कर दिया, और अब मैं इसको बोलूंगा now this is at point B। तो अब अगर मैं इन दोनों का potential difference निकालता हूं, so what is the potential difference? Potential difference must be VA minus VB is equal to WAB। What is the VA? What is the potential at A? कितना है? Yes, 10 volt। 10 volt. Very good। और B मतलब second potential, मतलब second potential surface, वहां पे कितना है? 9 volt. Very good, 9 volt, and that is work done AB। Now tell me whether in this case potential will be work done is 0? 1 volt. 1 volt means in this case you are not going to get zero potential, zero work done कुछ तो मिलेगा। So please remember, when you are going to moving on the same equipotential surface, the test charge work done will be considered as zero। But if you are going to move from one equipotential surface to the another equipotential surface, your work done will not be equal to zero। Okay, clear everyone? Yes, Yes, sir. पक्का सबको समझ में आ गया कि पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, मतलब कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, कहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर आप एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर चक्कर लगाते हो तो in that case your work done will be zero। but if you are moving from one equipotential surface to the another equipotential surface, your work done will not be zero। so this is what basically the representation of equipotential surface। okay, but student, have you observed this is only for the say only single point charge, एक सादा point charge के लिए। yes, clear है? ये एक single charge के लिए equipotential surface था। so for the case of single point charge, the equipotential surface shape must be spherical in region। okay, मतलब अगर कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल रीजन में होगा या तो स्फीयर के शेप में होगा। अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव से इनफाइनाइट प्लेन शेप, ऐसा एक इनफाइनाइट प्लेन शेप है हमारे पास, ठीक है? यस एवरीवन, क्लियर हो रहा है? एक ऐसा इनफाइनाइट प्लेन शेप है और इस प्लेन शेप के ऊपर से these are the charges, positive, 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 positive। okay, as we know, the field lines of this positive charge will be moving, okay, or will be in this direction। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। आपको पता रहेगा ये कौन सा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, which kind of electric field it is, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यस, ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बराबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो, तभी ये पॉइंट चार्ज था तो इसके अराउंड हम लोग ने सर्कल बनाया था। नाउ हियर दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, these are the straight line। so मुझे क्या करना पड़ेगा? what I have to do, I have to consider this is in the form of plane। okay, so the equipotential surface in the case of infinitely plane shape will be like this। तो ये बन जाएगा इसका
इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ये देखो ये बन जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ओके, सेम थिंग स्टूडेंट, सेम थिंग, the potential just near to the plane or this plane sheet के near आपको say 10 volt मिलेगा. If you go further away you will get say 9 volt. If you go further far away you will be get very less potential surface like say 5 volt. So this is what the representation of equipotential surface in the case of infinitely plane sheet. क्लियर है? अगर एक प्लेन पेपर है, प्लेन शीट है, उसके ऊपर अगर चार्जेस होंगे तो उसके अराउंड पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? सो उसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो एक इमेजिनरी प्लेन के जैसा होगा, एंड दैट प्लेन विल बी रिप्रेजेंटिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये पूरा 10 वोल्ट का सरफेस होगा, ये 10 9 वोल्ट का होगा, ये 5 वोल्ट का होगा। इफ यू गो मोर फर्दर अवे फ्रॉम द प्लेन शीट यू विल बी गेट वेरी लेस पोटेंशियल सरफेस। सो दिस इज व्हाट representation of equipotential surfaces. Understood everyone? Yes? Is it clear? Yes. So Okay. Okay. Now, student, here, whatever the work done, as we have mentioned, or you can observe here clearly, see, at this case, suppose you are moving from this small point field lines to the just a very small displacement. Like you are moving in between a very short interval of distance. देखो इतने distance पे अगर आप travel करते हो, okay? जैसे आप देख सकते हो ये field lines और ये field lines के बीच में आप travel कर रहे हो, okay? You are traveling in between the very small displacement. So in that case, the work done whatever will be considered, that work done is also become very small. I can write down that work done is dW. Why dW? Can anyone have any explanation why dW? Why not W? Yes, why dW? Because the work done is very small. Exactly, for the infinitesimal displacement, the work done is also very small. And I will be going to write down, or I can write down E vector dot dx vector. Am I right? What is E? E is the electric field. What is dx? Can anyone tell me in this diagram? What is dx in this case? What is dx? Yes, what is dx? What is dx in this case? Yes? Solid angle. Solid angle. No, beta, solid angle will become somewhere, but for the getting solid angle, these two field lines should be originating at a single point. But here you can observe these field lines are separate. See here. So there is hardly any chance of getting any solid angle. So to maybe surface area. Exactly. Here it is moving on this much surface area. Na? See this portion. I'm talking about this small surface region. Are you getting it? This is very small, no? So this displacement is dx. Getting it? I'm talking about this surface. yes. So this surface area must be dx. So it is moving with very short infinitesimal displacement dx. That's why dw is equal to E dot dx. Can anyone tell me what is the magnitude of E vector dot dx vector? Generally, yes, generally we can write E dot dx. E dx cos theta. E dx cos theta. Very good. E dx cos theta. Okay. Yes, everyone. Now tell me what will be the condition whether I can going to get dw is maximum or minimum. ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहां पे मुझे dw मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है? इट्स वेरी सिंपल. एट व्हाट टाइम? So minimum at 90 degree. Maximum at 0 degree Sorry? and minimum at 90 degree. Very good. Yes, yes, you are saying something. So that only. That only. Okay, that's the thing only here. If you'll get
E vector and dx. See, electric field का direction is here, and dx का direction is also somewhere here. Okay, so they are parallel. So in this case, the angle between them is 0. But now here, if electric field is going here and your dx is somewhere perpendicular, getting it? Here, electric field is going outward and dx must be say perpendicular. So in that case 90 degrees. So student, let us consider if theta equal to 0, you will be get E dx. Am I right everyone? Work done is maximum. Yes. And if theta is 90 degree, you will be get 0 work done. So this is only the maximum work done and this is only the minimum work done. So student, here from the diagram only you will observe if electric field lines direction and your displacement, if they are parallel, okay, if you are going to be moving in the same direction, angle between them is 0, then only work done will be maximum. If your electric field direction and your displacement are perpendicular to each other, in that case your work done must be 0, and that is nothing but the same thing we have calculated. Okay, clear है? मतलब आप यहाँ से दूर जाते हो तो आप दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे जाओगे तो वर्क डन मिलेगा. अगर आप सेम पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर ट्रैवल करोगे तो आपको वहां पे वर्क डन 0 मिलेगा. क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. पक्का? श्योर? सो have you followed about what do you mean by equipotential surfaces? Equipotential surface क्या होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. पक्का? किसी को कोई डाउट है कि लग रहा है कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समझ में नहीं आया? सो दैट आई कैन गो टू एक्सप्लेन अगेन. ओके, so student, equipotential surfaces are the surfaces which has equal potential at every point. Okay, and these are representing by three-dimensional geometries or the figures which can represent in a more detailed way about the potentials. Okay, and equipotential surfaces are on the same surface. If you try to calculate the work done, that work done will be 0. But if you move from one equipotential surface to the another equipotential surface, the work done will not be 0. So this is about your equipotential surface. Okay, if anyone wants to take a screenshot, you can take a screenshot over here, or otherwise I will take a print screen and I will send it in another group. Okay, is it clear? So shall I proceed for the next part? अगले part पे Yes. Okay. Yes. Okay, thank you so much. So everyone, now this is the part where we have done with all the potentials theory. We have possibly figure out all kind of potentials which can be generated by point charge, source charge, dipole, and their equipotential surfaces. Now we are moving towards the electrical energy of the 2-point charges and the dipole in an electrostatic field. Now student, our aim is going to change. अब तक हम लोग पोटेंशियल के पीछे भाग रहे थे. जो भी पॉइंट मिलता था, जो भी सोर्स चार्ज मिलता था, जो भी डाइपोल मिलता था, उसके अराउंड हम लोग पोटेंशियल निकालने में जुट जाते थे. नाउ राइट नाउ अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी कितना होगा. विच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि अगर वहां पे पोटेंशियल है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी है. तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट एनर्जी इज ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हम लोग वो एनर्जी फाइंड आउट करने के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको स्ट्रेंथ है, तो उसको एनर्जी होगा डेफिनेटली. सो वो एनर्जी निकालने के पीछे अभी हम लोग पड़ जाएंगे. तो यहाँ पे we will moving towards electrical energy. Okay, electrical energy of 2-point charges. ओके, पहले 2-point चार्जेस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है. मतलब 2 पॉइंट चार्ज होगा तो कितना होगा वो देख लेंगे. और नहीं तो
and of a dipole in an electrostatic field. Is it clear everyone? So सब लोगों को aim clear हो गया कि क्या करने वाले हैं अभी? Because aim is very important. अगर ये नहीं पता Yes. okay, अगर हम लोगों को यही नहीं पता चला कि what we are actually going to find, तो फिर वो theory अपने को नहीं समझ में आएगा. Means what is essential over here is to understand why we are doing this and what are the methods we are applying. Okay, what are the things or what are the methods we are going to apply over here. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा सेक ऑफ इंटरेस्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना. सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे, फिर बाद में डाइपोल के लिए करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट हियर our discussion is going to start with the first part. सबसे पहले पार्ट आएगा, I will call that as A part, जहाँ पे okay we will define what is electrical energy. Okay, what do you mean by electrical energy? Okay, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये तो हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन किया था. वापस एक बार बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, here I'm again revising the definition of electrostatic potential energy of a system of point charge or point charges is defined as the total amount of work done to assemble. देखो मैं यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, assemble. Here I am using this word purposely, assemble. The system of charges by bringing them from, yes, कहां से ला रहे हैं ये चार्जेस को? अब तक हम लोग ने सारे चार्जेस को कहां से लाया है, कहां से पकड़ के लाया? वेरी गुड. Infinity. From infinity to their present locations. Okay, yes everyone. तो देखो, what do you mean by electrostatic potential energy of a system of a point charges is defined as the total amount of work done. जो भी आपका वर्क डन है, जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है, किस चीज में यूटिलाइज हुआ है, इन फॉर व्हाट सेंस इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइजिंग टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस. मतलब वो जो चार्जेस है उनको सेट करने के लिए, और वो चार्जेस को लाया कहां से? तो इंफिनिटी से उनके प्रेजेंट लोकेशन पर. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया आप लोगों को डेफिनेशन क्या है? यस, पक्का, श्योर. कहां से ला रहे हैं इस चार्ज को? इन सारे चार्जेस को कहां से पकड़ के लाया? इंफिनिटी से. और कहां पे लोकेट कर रहे हैं? तो उनके जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of a point charges. Okay, clear everyone? Yes. Sure. Yes. तो अब जैसे यहाँ पे हेडिंग में बोला है, here we have already mentioned for the electrical energy for the 2 point charges. Student, here I have to consider 2 point charges. Okay, तो अपने पास अभी स्टार्टिंग में 2 point charges हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा. There will be 2 point charges, we have to assume it. And for that we have to calculate the electrostatic potential energy. So here
potential energy of a system of 2 point charges. Clear everyone? 2 point charges. ओके, सो आप लोगों को एम समझ में आ गया कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा एक सिस्टम में, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर एवरीवन? यस, Yes. ओके, शैल आई प्रोसीड? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो नाउ स्टूडेंट, हियर इफ यू रिमेंबर the same thing we have already applied in 11th standard in the concept of, say, Coulomb's law in vector form, where we have considered the 2 point charges under the, say, the axes of 3 axes, okay, which are originating at the single common point, okay, and we have assumed the 2 point charges kept under the such coordinate system. So similar picture we have to be put here also, okay. So for that, what is going to require is, I will be going to take, okay, the axes like here. This is what we can call as x-axis. This is the origin. Now, along this direction, okay, this is our z-axis, and finally this is our y-axis respectively. Okay, so this is x, y, z, our Cartesian coordinates, okay, the space, and we will going to representing our 2 point charge inside it. Okay, तो ये जो 2 point charge है वो हमको इस रीजन के अंदर अज्यूम करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चार्ज आई विल गोइंग टू कंसीडर हियर समवेयर. यहाँ पे दिख रहा है सबको? यस, Yes. ओके. दिस इज द पॉइंट ए वेयर आवर फर्स्ट चार्ज, अपना पहला चार्ज Q1 प्लीज. This is the another position or the another point called P, where the another charge is going to be placed Q2. Okay, everyone, clear? Hai? These are nothing but 2 point charges. Clear? Hai? 2 point. Yes. Oh, now, student, now it's our duty to represent their positions. इनका पोजीशन अपने को लोकेट करना पड़ेगा. अगर हम लोग इसका पोजीशन नहीं दिखा पाएंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये है एग्जैक्टली कहाँ पे. सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू ड्रॉ पोजीशन वेक्टर. अपने को यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं. डज एनीवन नो वेयर द पोजीशन वेक्टर इज एक्चुअली गोइंग टू ड्रॉ? पोजीशन वेक्टर कहाँ से बना था? फ्रॉम वेयर टू वेयर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर स्टैंडर्डली कहाँ से बना था हमेशा? From where to where it is drawn? Yes. Anyone have any idea? कि पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ बनाया जाता है? Yes. रोबन? नहीं पता? हाँ, गलत हो गया तो भी चलेगा, बोलो. सही सही. Negative to positive. नो, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वो ये बनेगा अपना डाइपोल है ना, वो डाइपोल का डायरेक्शन था नेगेटिव टू पॉजिटिव. हाँ, यहाँ पे कुछ रिस्पांस आया है. When a force is applied to an object, it causes its displacement. No, I'm not getting you, Prachi. What do you want to say? So the direction in which the force is applied. That is the direction of force, but here I am asking the position vector. Do you know now the definition of position vector? मतलब position vector का मतलब पता है ना, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पार्टिकल को.
बराबर. इफ एनी पार्टिकल इज अंडर द स्पेस ना, तो लोकेशन होता है वो हम लोग पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं. हाँ बराबर है, बोलो बोलो बोलो. यस से सॉरी यार. यस या टेल. Point from the So, frame of reference. sorry beta, I can't hear you. I can't get you. Your voice is muffled. Okay. So now, student, remember, whenever the part of point, From yes, origin. exactly, very good, from origin. बहुत अच्छा, शाबाश. याद रखना हमेशा कि जो भी पोजीशन वेक्टर होता है, किसी भी पार्टिकल का होने दो या मास का होने दो, that position vector is always drawn from the origin. तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हम लोग इस origin से from here I will going to draw one position vector up to the A. From the same origin I will going to draw the another position vector till B. But here you will be observing these position vectors are not in the same or same magnitude. Their lengths or the dimensions are not same because their locations are different. That's why the position vectors are also different. So I can call this is R1 vector, this is R2 vector. Is it clear everyone? अब याद रहेगा आपको आगे से कि पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से बनाया जाता है. Yes everyone? Yes, sir. पक्का ना. अभी याद रखना कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनता है और वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जहां से आप कोई भी पार्टिकल का लोकेशन निकाल सकते हो. इफ यू रिमेंबर देयर वाज वन एग्जांपल व्हिच इज शेयर्ड इन एनसीईआरटी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि समझो अगर एक कोई रूम है, लाइक एक बॉक्स टाइप रूम है, अगर उस बॉक्स टाइप रूम में अगर कोई फ्लाई बी अगर इंटर करता है और अगर आप वहां पे number of persons are already seated and they are observing that fly. So everyone have different positions with respect to their places. Okay. By the time they are observing the fly is also moving. So हर एक observer का उस fly के लिए position different होगा. But अगर सारे observers जाके अगर origin पे बैठ जाएंगे ना, तो सारे observers के लिए वो जो फ्लाई बी का जो भी पोजीशन होगा वो पोजीशन सेम रहेगा. सो हियर वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर. इसीलिए पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है. ओके, क्लियर रहेगा आप लोगों को यहाँ पे? ओके, we can't going to take any random positions on x y z. In spite of that we can consider the origin. तो origin सबसे बेस्ट फिट होगा जहां से हम लोगों को प्रॉपर हर एक बोलते हैं ना कोई भी पोजीशन का जो भी डायरेक्शन है वो सब हमेशा इक्वल मिलेगा. ओके ठीक है. तो दिस इज व्हाट बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 एंड r2. अब क्या करते हैं देखो, सी पे अटेंशन एवरीवन. हियर आई विल गोइंग टू जॉइन the line between or the line joining between the A and B as well. ये देखो इसको join कर दिया. So if you remember the same thing which you have learned in your vector chapter called triangle law of vector addition. Am I right? Triangle law of vector addition. Yes, sir. So the triangle law of vector addition is going to suggesting us, suppose there are two vectors. If you just join their tail and head, so you will be get the third vector, and that third vector is nothing but a resultant of those two vector. तो यहाँ पे जो resultant मिलेगा, that resultant will be, yes, that would be R12 vector. Clear है सबको? Yes. Vector. This is the basically the line as well as the distance between the 2 point charges. Clear है everyone? सबको समझ में आ गया यहाँ का डायग्राम क्या है? Yes, sir. Okay, आगे बढ़े फिर. So here what we have considering, these are the 2 point charges kept under the XYZ, say XYZ space, and we are trying to find out the potential energy. Potential energy निकालेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. तो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए. सी फॉर गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वी नो द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो अगर आपको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता हो जाएगा. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको पोटेंशियल एनर्जी
पता ही नहीं हो, पोटेंशियल तो होगा ऑब्वियसली हर एक सरफेस का, मतलब हर एक चार्ज के आजू बाजू में उसका जो भी फील्ड होगा उस फील्ड के अराउंड उसका पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, और उस पोटेंशियल के वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। तो स्टूडेंट, हियर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो पहले सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे फोकस करो Q1 के ऊपर, जस्ट फोकस on point charge Q1. Okay, if this point charge Q1 is placed in between this space at a distance R1 from the origin, what will be the potential? Potential will be V1, which is equal to, अरे ये तो पॉइंट चार्ज है, अपने को पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 1/4 पाई epsilon naught Q1 by R1. Am I right, everyone? Can I say this is the potential Yes. of single point charge? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये पोटेंशियल होगा वो सिंगल पॉइंट चार्ज का Q1 by R1? Yes, everyone? Clear है? Yes. Okay. Yes. Now अब क्या करेंगे देखो, see now when we bring Q2, अभी ये जो आपका Q2 है ये कहाँ पे था, तो समझो Q2 इंफिनिटी पे था। अब आपने क्या किया पता है, व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू यार, ये Q2 ठीक है, ये यहाँ पे रख देते हैं। चलो, ये ना इंफिनिटी पे बैठा हुआ था, चलो टाइम पास कर रहा था, अब इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके आया। चलो देखो चल भी नहीं रहा, देखा, ये देखो अभी यहाँ पे आ गया। ओके, अभी Q2 यहाँ पे आ गया, तो ये खुद से तो नहीं आया, इसको हम लोग लेके आए, तो हम लोग ने किया वर्क डन, बराबर? Yes, everyone? Clear है? Yes. We are actually doing the work to bring that charge from infinity to this present location. अभी आपको समझ में आ गया कि definition में present location मतलब कौन? Present location means B. Clear है? Yes. So what will be the work done? Work done is here. Work done is, I can say, W2, which is acting, that is the work done acting on the second charge. Okay, and you will be observing wherever the point B is right now, it is surrounded by the potential of Q1. Am I right? बराबर everyone? जहां पे ये B है ना, उसके सराउंडिंग रीजन में क्या होगा, पोटेंशियल which is created due to Q1. बराबर है कि नहीं? Yes, everyone? Yes, sir. देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऑलरेडी जब Q1 XY प्लेन में था या XYZ स्पेस में था, तो Q1 ने ऑलरेडी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप जहां पे भी जाओगे वहां पे आपको उसका पोटेंशियल मिलेगा। हमने क्या किया, इस Q2 को इंफिनिटी से खींच के यहाँ पे लेके आया। जैसे Q2 को यहाँ पे लाया तो Q2 को लाने के लिए वर्क डन हो गया। अब वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन में। Am I right, everyone? क्लियर है? दैट वर्क डन कैन बी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Am I right, everyone? क्लियर है? यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है? Is it clear? Okay, so now this work done is nothing but potential at B due to which charge? Due to, yes everyone, due to Charge Q1. Q1. Very good. Multiply by which charge we are going to bring in the electrostatic potential? कौन से charge को खींच के लाया है? Q2. Charge Q2. Very good. Shabash. Up. Therefore, W2, that is the work done acting on the second charge, which is under the potential due to first charge. अरे इसका potential निकाला है ना हम लोग ने, V1 into Q2. But my dear student, we know the value of Q V1. कितना आ जाएगा? W2 is equal to, yes, can anyone tell me what is the V1? Yes, V1 कितना है? 1/4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. बराबर बोल रहे हो? आगे Q1/R1. Q1/R1 multiply by Q2. Q2. Or if I'm going to write down this in the composite form,
I will be get, yes, I will be going to obtain 1 upon 4 pi epsilon naught. Yes, कौन बताएगा? Yes, who is going to tell me the final equation? क्या लिखूं यहाँ पे? What will be the final equation? Yes, Q1 Q2 upon R1. R1 मतलब क्या? R12. Is it clear, everyone? What is R1 to 2 is nothing but EB. That is the EB distance. Clear है? Yes. Okay, so this is what. सर R12 कैसे आया? अच्छा, R12 कैसे आया? तो देखो अभी यहाँ पे ये जो वर्क डन हम लोग ने किया ना, हम लोग ने क्या किया, इस Q2 को इंफिनिटी से लाके अभी B पे रखा है, बराबर है? Is it clear? Yes, sir. So now whatever will be the potential is acting on Q2 due to Q1, which is at a distance separation R12. समझा? अब यहाँ पे Yes, sir. हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग ने R1 लिया था क्योंकि वो तो सिर्फ पॉइंट A का पोटेंशियल था, बट अभी Q2 के ऊपर जो पोटेंशियल एक्ट हो रहा है, मतलब Q2 is going to be experiencing whatever the potential ना, that potential is at a distance R1 to 2. Is it clear? Yes, sir. इसीलिए 1 to 2 आया. अभी समझा आपको? अरे Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, आप में से कौन मुझे ये बताएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी? वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन? So work is a form of energy, no? वेरी गुड. और आगे आगे बराबर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आगे यस, लिटिल बिट, just little bit away from the exact point. Work is a form of energy. Yes, or can I going to say for doing any work energy is necessary? Yes, energy Yes. is No. okay. Or otherwise I can also say conversely, if there is work that is going to happen only due to the support of energy. Yes or no? The work done which is going to be happen, that is only due to the support of energy. The student, here you can going to see whatever work done we have done on the charge Q2 to bring from infinity to this point will be stored inside this system in the form of electrostatic potential energy. तो जो भी वर्क डन किया था Q2 के ऊपर यहाँ तक लाने में, और अब जब Q2 इसमें assemble हो चुका है, where the Q2 is assembled under the potential of Q1, so the potential energy will be, हम लोग potential energy को U से represent करेंगे, that is the electrostatic potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 2. So my dear student, this is the electrostatic potential energy. Okay, clear है सबको? Yes. Yes. This is what Yes. electrostatic potential energy. So please remember, U is nothing but the potential energy notation and V is only representing potential. तो ये दोनों में डिफरेंस है. U हमेशा एनर्जी के लिए यूज करेंगे और V हमेशा पोटेंशियल के लिए यूज करेंगे. अब दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बराबर है कि नहीं? यस, करेक्ट है. ये कौन है? यस, टेल मी. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज Potential वेरी गुड, शाबाश. और ये क्या है? व्हाट इज दिस? for energy. That is, sorry, pardon. That is potential energy. Clear है सबको यहाँ पे? Everyone? Sorry, pardon. I didn't get you. Sorry, your voice is muffled. I can't hear you properly. Yes, you have a doubt. If your network is not good, you can do one thing. You can chat in the chat box. If you have a QA, if you have any query, you can
just type it or text me in the chat box. Prachi sound, what thing should I going to repeat, or should I repeat again the electrostatic potential energy apart? Okay, fine. Student, is it clear? क्या आपको समझ में आ गया कि 2 पॉइंट्स सिस्टम होगा, मतलब 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, तो जब आपने वर्क डन किया उस सेकंड चार्ज को जिसको आपने असेंबल किया है फर्स्ट चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके एवरीवन, क्लियर है यहाँ पे? ओके Yes. अच्छा, पर फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है, मतलब अगर आप में से कोई ये बोलेगा कि सर व्हाट विल हैपन इफ इंस्टेड ऑफ ओनली 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस के बदले में अगर n पॉइंट चार्जेस होगा तो क्या होगा सर? बराबर है ना? दैट क्वेश्चन कैन बी आल्सो अराइव। सर अगर 2 पॉइंट चार्ज के सिवाय यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो गए, व्हिच मींस इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट इन द सेम सिस्टम, व्हाट must be or what will be the expecting okay potential energy? तो expecting potential energy क्या हो सकता है? So it is again very simple student. Here if you are representing, or I can say if you are just assuming there are say the point charges which are n number of say n number, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि say there are q1 q2 q3 up to infinity or n number of say. So due to that what will be the potential energy of a system? Potential energy क्या हो सकता है इस केस में? तो अगर समझो मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ जैसे कि अभी हम लोग ने पहले कंसीडर किया था कि यहाँ पे Q1 Q2 they are already present, okay, they are already present and they have already established their potentials and we have already calculated their electrostatic potential energy of the system also. And now newly I am introducing the another charge called Q3. अब Q3 को कहीं से तो पकड़ के लेके आ गए हम लोग, हाँ वो भी इंफिनिटी पे बैठा हुआ था, उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे बिठा दिया। अब आप लोगों को पता है अगर Q3 है, बराबर ना एवरीवन, अगर Q3 है तो इसका भी तो अपने को पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? टेल मी। Q3 है तो इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से बनाएंगे वापस? फ्रॉम वेयर वी कैन? From origin. फ्रॉम द ओरिजिन। वेरी गुड। तो चलो यहाँ से ओरिजिन से एक और एक हम लोग ने पोजीशन वेक्टर ले लिया Q3 तक। ओके, फ्रॉम हियर चलो जरा Q3 को इधर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इधर यहाँ पे Q3 आ गया। ओके, नाउ वी कैन कॉल दिस पोजीशन एज R3 वेक्टर। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो बताओ जल्दी, सही है? इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया, बराबर ना? नाउ व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्ज Q2 एंड Q3? लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्ज Q2 एंड Q3। यस, लाइन R vector 2 3. वेरी गुड। R वेक्टर, सॉरी, R वेक्टर 2 3। इसमें क्या हो गया? Sorry, am I audible everyone? Yeah. Yes. Okay. I don't know why this is not working. R2 3, R vector 2 3. R vector 2 3. Okay. So now what you have to do, you have to just make a simple change in our original equation. ये जो अपना original equation है ना, इसमें एक छोटा सा change करना पड़ेगा आपको। That's only the thing. Here student, you have to make a pair. जैसे अभी अपने pair किया था, जैसे Q1 Q2 R1 to 2 है ना, 1/4 pi epsilon naught तो हमेशा मतलब common ही रहेगा उसमें। So
what is the, yes everyone, what is the potential energy for such system of charge where n number of particles or n number of charges are involved. For that we can obtain 1/4 pi epsilon naught. ऐसे सिस्टम के लिए जहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस है वहां पे आपको मिलेगा 1/4 pi epsilon naught से q1 q3 upon yes r13 plus q2 q3 upon r23 and so on. Okay, as depending where you are going to plug the charges. आप charges को कैसे plug कर रहे हो, मतलब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो q1 के साथ q3 तो q2 के साथ q3 तो q3 will be common for them. So in this case you will be getting okay q1 q3 plus q2 q3 upon r223 and so on. Okay student, so like this way. There also one more possibility if I'm going to take fourth charge. अगर fourth charge ले लेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में एनर्जी बन जाएगा U equal to 1/4 pi epsilon naught. Student, now 4 charges are there, so let's make the pair like q1 q4. Here positions between them, position vector between them is, yes, can anyone tell me? R14, वेरी गुड, प्लस समझो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 और 4 को, 2 और 4 को लिया तो R24 isn't it? और अगर Q3 को लिया Q4 के साथ तो R3 4 and so on. So student, this is the expecting electrostatic potential energy in the case of system of n point charges. अगर n point charges हो जाते हैं तो स्टूडेंट अपने को इतना पोटेंशियल एनर्जी मिल सकता है. Now you will be going to say, sir, why this 1 to 4 or why this 1 to 3? So student, here based on the pairing of charges, आप किसके साथ इसका पेयरिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर से ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगा between 1-4 charge, between 2-4 charge, between 3-4 charge and their respecting position, okay, or resultant, okay, resultant position vectors. Is it clear everyone? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये बन गया हुआ, ये 1-4 का पेयरिंग, 2-4 का पेयरिंग और 3-4 का पेयरिंग करोगे तो उनके पोजीशन या रिजल्टेंट वेक्टर भी वही होंगे जो उनके बीच का डिस्टेंस है. ओके, सो दोस आर ओनली द डिस्टेंसेस बिटवीन देम. ओके एवरीवन, क्लियर है? यहाँ पे आप चाहिए तो Yes, sir. आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन डू इन दिस वे आल्सो. देखो ये भी बताता हूँ, ये देखो. नाउ हियर यू आर रिप्रेजेंटिंग व्हिच टू चार्जेस? आप कौन से दो चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहे हो? Q1 and Q3. वेरी गुड, Q1 एंड Q3. तो अभी मुझे बता दो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या होगा? R, yes, R13, राइट? करेक्ट है ना? R, Yes. yeah, this is the what distance separation between the two charges, like 1 and 3. So in this way you can go to arrange, okay, n number of charges and you can find their resultant potential energies. Okay everyone, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल कितना होगा? यस एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? डज एनीवन हैव एनी से एनी डाउट और एनी डिफिकल्टी? कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क. ओके, इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? अगले पार्ट के लिए बढ़ते हैं हम लोग. तो यहाँ से हम लोग ने क्या सीखा, मतलब what we have learned from here, what we have learned from here is nothing but a simple understanding about the potential energy. देखो PE, potential energy is the product of charge into potential over the distance. Am I right? Can you able to relate this? क्या आप इसको relate कर सकते हो?
Yes, can you able to relate this? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये? Potential energy क्या है? What is potential energy? Yes, can you able to relate this part? आप इसको relate कर सकते हो? Yes, anyone? What is potential energy? It is the product of two quantity. One is charge and result. Charge. charge और दूसरा क्या है? Charge और Result. here this point. Charge and Potential. exactly charge and potential. Okay, this is the nothing but the product of charge into the potential at a distance, potential over the distance. Okay, the potential over the distance. जैसे कि यहाँ पे बताया था ना कि ये जो चार्ज है Q2 इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है वो ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ Q1. इसीलिए देखो यहाँ पे we can say the potential energy over the charge, okay, due to its potential. That's why potential energy is Q times potential over the distance R. Okay, everyone. P is equal to Q into V of R. V of R is a function of distance. Potential is a function of distance. Okay, clear है यहाँ तक सबको? समझ में आया? Yes. Yes. किसी को कोई भी डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझा है, प्लीज आस्क. Is it clear? Everyone? आगे बढ़े. Yes. किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क. Okay. So now, student, here these are the point. These are basically nothing but we have tried to calculate or try to just kind of figure out what is the potential energy due to the point charges, due to the system of n particle of charges or n number of charges, or for the single charge or for the in case of external charge. Okay, for this case, I can say the Q2 will be under the external field only ना. इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ना कि Q2 जिस फील्ड में है वो फील्ड उसके लिए तो एक्सटर्नल ही हो जाएगा क्योंकि वो Q1 ने क्रिएट किया था. So for that case also we have calculated the potential energy. So these are the part of the potential energies with respect to the charges and their potentials. Student, here we have done it with electrical energies of 2 point charges. तो वो कौन से हो सकता है? 2 point charge के लिए हो सकता है ना, या तो फिर n number of point charges के लिए हो सकता है, या तो external charge के लिए हो सकता है. So these are the expressions or expecting potential energies expression. Okay, clear है यहाँ तक आप लोगों को? Yes, आगे जाए. Shall we proceed? तो आपने देखा रहेगा यहाँ पे मैंने हेडिंग में क्या लिखा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. तो ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए n पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई फॉर द डाइपोल. अगर डाइपोल होगा तो डाइपोल के लिए कितना होगा वो अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? तो अभी आपका नेक्स्ट जो एम होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल जो कि एक्सटर्नल फील्ड में होगा. ठीक है, ऐसा डाइपोल जो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है और उस केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो सकता है. व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल एनर्जी वी कैन गेट. तो चलो चलते हैं अगले पॉइंट पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एनर्जी yes everyone, potential energy of a dipole where it is kept in an external field. Okay, where it is kept in an external field. कहाँ पे रखा है? Yes, where it is kept under the external field. तो पहले अपने को इसका पूरा सिचुएशन ड्रॉ करना है.
इज इट क्लियर एवरीवन? एम समझ में आ गया हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? Yes, sir. अब तक हम लोग ने कौन से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाला? जस्ट टेल मी अगेन, इसको समझा अच्छे से कि अब तक हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी किसका निकाला? किस चीज का हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया? यस, एनीवन? Just now we have evaluated the expressions. Those expressions are corresponding to which potential energy? कौन से टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज थे वो, और किसके पोटेंशियल एनर्जीज थे, जरा बताएंगे आप लोग? Can you tell me? Point charges. Exactly, point charges के लिए अप्लाई किया था. मतलब point charges मतलब आपको पता है ना, those are isolated or individual charges. Their identity is individual. वो जो point charges थे ना, वो सब individual charges थे. तो ऐसा there was no any connection already present between them. हम लोग ने उनको कहीं अलग-अलग infinity region से लेके आके रख दिया था और assemble किया था system के अंदर. But अभी situation different है. Right now there will be a dipole already present. तो आपको पता है dipole कैसे होता है? Dipole ये isolated नहीं होता, ये system होता है. Dipole किसका बनता है, जरा ये बता दो आप लोग. Just tell me, dipole is going to be made up by what? Dipole. Positive. Two charges, बराबर. दो charges का मिलके बनता है. तो ये जो डाइपोल होता है ना, ये डाइपोल एक्चुअली इंडिविजुअल नहीं है, तो ये पेयर है जो ऑलरेडी सेट हो चुका है, जिसको हम लोग एक एज ए सिस्टम बोलते हैं, जिसमें दोनों चार्ज इन्वॉल्व होते हैं. पॉइंट चार्ज के केस में कैसे था? दोस चार्जेस आर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू एनसेंबल देम अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. हम लोग क्या कर रहे थे, उसको एक किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर सेट कर रहे थे. अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डाइपोल का कैलकुलेट करेंगे, जो कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में होगा. तो डाइपोल ऑलरेडी हम लोग ने लर्न किया है इसके पहले. डाइपोल मोमेंट या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल होता है P इज इक्वल टू, यस कौन बताएगा? P इज इक्वल टू Q into 2L. वेरी गुड, Q into 2L. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, एक डाइपोल लेना है और उसको किस में रखना है? एक्सटर्नल फील्ड में. तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड बना लेते हैं फटाफट. तो ये लो, एक्सटर्नल फील्ड बनने के लिए रेडी है. ये देखो, ये आ गया एक्सटर्नल फील्ड. ये देखो एक्सटर्नल फील्ड आ गया. ये देखो एक्सटर्नल फील्ड आ गया. ये देखो एक्सटर्नल फील्ड आ गया. सो दीज आर दी एक्सटर्नल फील्ड. बट मैं इनको सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड नहीं बोलूंगा, तो मैं इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा. आई एम गोइंग टू कॉल दीज आर एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एम आई राइट? यस स्टूडेंट, isn't it? Can I going to call those lines are uniform electric field lines? Yes everyone, because they all are in the same direction and they are equispace. Okay, let's assume there is a electrostatic dipole is going to keep inside. Okay, तो इनके बीच में अपने को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल रख देना है. तो ये देखो यहाँ पे एक डाइपोल है, यहाँ पे दूसरा. ओके, आई विल कॉल दिस चार्ज इज -Q और यहाँ पे होगा +Q. इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? श्योर एवरीवन? श्योर ना? दीज आर द टू पोल्स ना ऑफ द चार्जेस +Q एंड -Q. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट्स ड्रॉ द कनेक्शन बिटवीन देम. तो ये लो, यहाँ से बन गया कनेक्शन दोनों के बीच में. What is the distance between them is, yes everyone, 2L. Correct है? Yes, the distance separation Yes, sir. twice of L. Okay. What is the definition of electrostatic field? Electrostatic field क्या होता है? E is equal to F upon Q. मतलब electrostatic force per unit charge. Can I say? मैं ऐसे बोल सकता हूँ? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना रेशियो होता है. किसका रेशियो होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज का. अच्छा, तो क्या मैं इसमें से फोर्स का एक्सप्रेशन बना सकता हूं? कैन आई गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? Q into E. Am I right? Yes. Yes. Okay. Okay. Now, student, just help me to figure out here
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? Right side. तो ये देखो राइट साइड में ये फोर्स लगेगा, बराबर, करेक्ट है? Yes. That force will be, Yes, sir. that force will be plus QE. Can I say plus QE is the force which is acting on the right hand side? Yes. Yes, everyone. Yes, sir. ओके, एक ना इसको निकालते बाजू में, यहाँ पे इस प्लस को भी निकालते हैं, यहाँ पे निकलेगा नहीं। ओके, चलो यहाँ पे ओके, इसको करते हैं यहाँ पे शिफ्ट आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है दैट इज F इज इक्वल टू QE, दैट इज पॉजिटिव, ओके, दैट इज पॉजिटिव। हेलो, Yes. ओके, आई थिंक एप्लीकेशन क्लोज हो गया, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन, all of a sudden that application get closed. So, student, here the distance between them is 12. Okay, distance between them is 12. As we have already discussed about the force F is equal to Q into E. So, according to the charges, that force can be plus if it is plus Q into E, and that force can be negative if Q is negative, minus QE. So these are the two forces can be acting on the dipole in such a way you will be getting the plus F, that is the plus force will be acting on the dipoles plus Qn like this, okay, and the force will be plus Q into E acting on the right hand side. Next is nothing but, student, the another force which is the negative force which is acting on the left hand side, and that force is minus QE. Now student, can you see one thing? These are the two forces equal in magnitude but opposite in direction. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो दो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड सेम है? अरे ये देखो ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, Q इंटू ई, सिर्फ इनका डायरेक्शन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. So you know when these forces are acting almost perpendicular to the distance, somewhere अगर इसको मैं थोड़ा सा perpendicular distance अगर consider करता हूँ, okay, so what will be the torque? Yes, what is the definition of torque? Torque is equal to, yes, electrostatic torque. Electrostatic torque is P into E. P into E, that is electrostatic dipole moment into electric field. So this torque is acting on the dipole. समझ में आ रहा है आपको? इतना टॉर्क इस डाइपोल के ऊपर एक्ट होगा और उसके वजह से ये जो डाइपोल है ये रोटेट करेगा अंडर द एक्सटर्नल फील्ड. ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो टॉर्क है ना, दिस इज कॉल्ड द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी what is the magnitude form of this torque? ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा? P sin theta. वेरी गुड, PE sin थीटा इक्वेशन 1. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, नाउ सी स्टूडेंट, जस्ट अज्यूम इट हियर, जस्ट अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि
This is the center of the dipole. This is the center of the dipole. If I'm going to draw an imaginary axis which is passing through this dipole center, ऐसे dipole के center से ये एक imaginary axis pass हो रहा है like this. देखो ऐसे अगर मैं इस dipole को ओके इस dipole के बारे में बात कर रहा हूं, अगर इस dipole को मैं rotate करूं, see can you see here that dipole is rotating ना? Yes everyone, can you see dipole is rotating? देखो now it is parallel to electrostatic field lines. बराबर यहाँ पे electrostatic field lines के साथ parallel हो गए. Yes everyone, dipole है ना, dipole वो electrostatic field lines के साथ parallel हो गए. दिख रहा है आपने आपको? Yes or Yes, sir. okay, very good. Now the angle between them is angle between electrostatic field and the dipole. Zero. Very good. 0 degree. 0 डिग्री, एकदम सही, 0 डिग्री. वेरी गुड. अच्छा अभी देखो आगे वापस इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ. चलो यहाँ पे इसको करते हैं रोटेट. चलो भाई रोटेट हो जाओ यहाँ से. और कितना रोटेट हो सकते हो? चलो पूरा मैक्सिमम रोटेट कर दो. अब ये कितना हो गया? यस, व्हाट इज द एंगल? 90 degree. 90 degree. 90 degree. Very good. Theta is equal to 90 degree. एकदम सही है. So now student, here can I going to say this dipole can be oriented between 0 to 90 degree? Yes, 0 to 90 degree. Yes or no? Yes. 0 to 90 Yes, degree रोटेट किया था. Yes. एक मिनट, होल्ड ऑन, एक मिनट. और एक चीज बताता हूँ, वापस एक चीज बताओ. देखो इस डाइपोल को सिर्फ 90 डिग्री नहीं, ये देखो कितना रोटेट किया अभी? 180. 180. वेरी गुड. 180 मतलब इसको मैं 0 to 180 डिग्री में रोटेट कर सकता हूँ ये पूरे डाइपोल को. Am I right? Yes everyone. तो चलो, so this is what basically the orientation of dipole can take place between the angle 0 to 180 degree. Okay, clear है यहाँ पे सबको? Yes. Yes. So now student, here you can going to see for orienting this dipole between 0 to 180 degree, we have to say provide some work done. But work done हम लोग नहीं provide कर रहे हैं, वो work done automatically हो रहा है due to electrostatic field. That's why that dipole will be going to orienting between the external electric field in the inclination or in the orientation 0 to theta. तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. दैट वर्क डन व्हाटएवर इज एक्टिंग ना, दैट वर्क डन इज W, and obviously dipole will be orienting between the initial angle to the maximum orienting angle theta naught और theta. क्या आपको समझ में आ रहा है theta naught क्या रहेगा? theta naught क्या होगा? 0. और theta क्या होगा? मैक्सिमम ओरिएंटेशन 90. 180. हाँ 180. मैक्सिमम ओरिएंटेशन ना उसका. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. दैट इज नथिंग बट योर टॉर्क एक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा. आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वर्क डन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? Yes. टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. यस एग्जैक्टली. अगर टॉर्क हो रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है. ये देखो, देखना है आप लोगों को, ये देखो एंगल, सी एंगल है ना. दिस एंगल इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 0 to 180 फेज. सो दिस इज व्हाट द वर्क डन बेसिकली वी आर ऑब्टेनिंग, है ना. करेक्ट है स्टूडेंट? यहाँ पे इतना वर्क डन अपने को मिल रहा है. तो चलो ना कैलकुलेट कर लेते फटाफट. कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जस्ट से W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इनिशियल एंगल to the final angle of orientation torque theta. एक सेकेंड, अभी तो कैलकुलेट किया torque theta, मतलब यही होगा. That is, yes, what should I going to write? P E, हाँ बोलो आगे बोलो. P E sin theta into d theta. Is it clear everyone? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि what is the torque is a function of theta, that is nothing but the function of E sin theta. क्योंकि देखो ना यहाँ पे एंगल आया, टॉर्क किसका फंक्शन है? टॉर्क थीटा का फंक्शन. चलो अभी इसको सॉल्व करना है. चलो हेल्प करो मुझे फटाफट, बताओ क्या करना है. पहले W इज इक्वल टू
व्हाट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन? क्या करें रूल ऑफ इंटीग्रेशन का? कोई कांस्टेंट है जो इसमें से बाहर निकल सकता है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन एक्ट नहीं होगा? इज देयर एनी टर्म व्हिच इज कांस्टेंट ऑन व्हिच द इंटीग्रेशन नेवर गोइंग टू बी एक्ट? यस, ऐसा कोई क्वांटिटी जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन और थ्रू आउट द थियरी, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज ही नहीं होगा? कैन आई गोइंग टू से डाइपोल मोमेंट? इसका डाइपोल लेंथ तो सेम रहेगा ना? ये जो चार्जेस है इनके बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो सेम रहेगा ना? दैट इज p ओनली. आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस स्टूडेंट, और स्टिल कंफ्यूज? अच्छा, डू वन थिंग. हेलो, am I audible ना? Can you hear me? Yes. Okay. Okay. Let me tell you the simple rule of integration. Integration is only going to be act upon the variable quantity. The quantity which can going to be, say, vary within the, say, the function of interval. Say, like for example, there is some interval of time is taken in between that. If the time is keep on changing, so that time is a variable quantity on which the integration can act. But the integration cannot be going to act upon or act on the constant quantity. ऐसा जो क्वांटिटी होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं एक्ट हो सकता है. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन 12 तो सेम रहेगा. इट विल नेवर गोइंग टू चेंज, व्हिच मींस द डाइपोल मोमेंट इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब p. और नेक्स्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, the applied external electric field. Applied external electric field matlab E. E is also not going to change. So simply student, in between this integration sign, ये जो इसके अंदर है, the term which is kept inside the integration, PE will come outside. Okay. So now integration will be acting upon theta. The limits are theta naught to theta. Yes, किसके ऊपर एक्ट होगा? Sin theta d theta. Is it clear everyone? Yes. पक्का? तो sin theta d theta के ऊपर इंटीग्रेशन एक्ट होगा. चलो मुझे बताओ, आप लोगों को इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है? Does anyone know what is the integration of sin theta? Sin theta का इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन स्टूडेंट? नो वन? नहीं पता? Yes. Okay, no problem. I am going to tell you the integration of sin theta d theta is minus cos theta. ठीक है, याद रखना. sin theta का जो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है माइनस cos theta. तो चलो यहाँ पे sin theta d theta निकाल लेते हैं. वो आ जाएगा आपका माइनस cos theta. By the way, there are two limits are involved. Those are theta naught and theta. Is it clear everyone? यहां तक समझ में आया? Is it clear कि नहीं? नहीं समझा? पक्का ना? श्योर? sin theta ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, that is a standard trigonometric function जिसका फॉर्मूला है integration of sin theta d theta is minus cos theta. Okay, तो यहाँ पे sin theta d theta आ जाएगा minus cos theta. By the way, there are limits are involved which are nothing but theta naught to theta. तो यहाँ पे क्या करेंगे? Here we will introduce the formula or the rule called upper limit minus lower limit. चलो, minus cos. What is the upper limit value? थीटा का वैल्यू अपर लिमिट 180. 180 मतलब थीटा ना? करेक्ट ना? आपको यही बोलना है ना? 180 मतलब ये. Yes, sir. You want to say this theta? Okay, this is upper limit. So I'm going to substitute this is theta minus of lower limit. Lower limit क्या है? Lower limit मतलब cos Theta naught. theta naught. Very good. And then bracket close. Let's simplify this because there is already a minus sign we're going to convert,
and we will get the work done is equal to P into E. Yes, कौन बताएगा? माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा? Plus cos. प्लस cos of थीटा नॉट. ये ना थोड़ा सा irregular दिख रहा है, isn't it? Irregular दिख रहा है. तो how we can write it properly? Proper way में कैसे लिखेंगे? What will be in a proper systematic way? Cos of, yes, है ना? ये देखो ना, माइनस साइन और प्लस साइन आ गया, तो इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? Which will be idealized, जो हम लोग जनरली करते हैं. पहले पॉजिटिव आ जाएगा, which is cos theta naught minus cos of theta. Is it clear, everyone? Yeah. Yes, sir. Yes. Sure. Yes, sir. Okay. So now, student, this is nothing but the work done. Okay, work done. We will obtain in the case of dipole kept it under the external electric field. इतना work done होगा. तो अभी अपने को पता है ये जो work done होने वाला है, ये work done इस external field में store हो जाएगा in terms of, yes, कौन बोलेगा? Final, in terms of potential energy. Am I right? Clear है? In terms of potential energy. तो कितना होगा potential energy? It's very simple. That potential energy will be nothing but PE cos of theta naught minus cos of theta. So this is what the electrostatic potential energy in the case of dipole. Followed everyone? Clear है यहाँ तक? Yes, sir. पक्का? Sure? समझ में आ गया यहाँ तक? Understood or not? Yes, sir. पक्का? चलो, तो एक असाइनमेंट दूं आप लोगों को, इसी के ऊपर बेस देखते कितना अच्छी तरह से आप लोगों को समझा. ठीक है? Assignment is just get back to the diagram again, and if this dipole we are going to make horizontal, okay? So when you going to make it horizontal, the initial angle is theta naught. That's supposed to be 0 degree. Barabar? That's supposed to be 0 degree. And if you orient this dipole, okay, in such a way, when this dipole length will become perpendicular to external field, मतलब ये जो dipole length है, ये आप क्या कर दोगे? Horizontal से डायरेक्ट vertical कर दोगे. तो vertical करने के बाद अभी थीटा कितना हो जाएगा? Yes, थीटा कितना हो जाएगा? Yes, tell me. 90. 90. 90 degree. Very good. So now, if theta naught is 0 degree and theta is 90 degree, which means you have just orient the dipole from 0 degree to the 90 degree. Okay. So what will be the potential energy in this case? You have to calculate. This is the first part. Understood? ये first part हो गया. Clear है? Yes or no? Sure? Okay. Now next, next. अभी next वाला देखो क्या. Suppose you have made or you have just placed it the dipole in such a way, okay? The dipole length is parallel to the external electric field. मतलब external electric field को ये ऐसे parallel रहेगा. आपने क्या किया? अभी इसका थीटा नॉट 0 है. आपने इसको पूरा ओरिएंट कर दिया, कंप्लीट ओरिएंट किया. देखो वापस एक बार देखो. कैन यू सी दिस? आपने इसको कंप्लीट ओरिएंट कर दिया ऐसे. ओके. सो नाउ इन दिस केस second part, you have to calculate the same potential energy, electrostatic potential energy for the dipole. You have to use PE cos of theta naught cos of theta. In this case, theta naught is 0 degree and theta, yes, 180. 180. 180. तो स्टूडेंट आपको ये दो कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फॉर द डायपोल. Is it clear? If you want it, you can take a screenshot and next lecture में मुझे बताना कि कितना पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा अगर आप डायपोल को 0 to 90 डिग्री रोटेट करते हो या 0 से पूरा 180 डिग्री रोटेट करते हो, तो कितना पोटेंशियल आपको
मिलेगा in the case of dipole. Okay, is it clear everyone? आज तक का पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, clear है? Okay. Yes, anyone have any doubt or any part, difficult part? I will do one thing again. I'm going to take the print screen of this lecture part and I'm going to send you on the group. Okay, don't worry. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो, ओके, तो प्लीज आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल गो टू क्लैरिफाई दैट. ओके, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना जो भी पार्ट होगा. ओके, और ये असाइनमेंट जो है आपको दिया है, इसका क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में एक्सपेक्ट करूंगा. ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन. चलो, हियर आई एम स्टॉप शेयरिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन. ये श्रुतिका, श्रेया, रेबिया, राज्यलक्ष्मी, सेवा. हेलो, do you have any doubt or difficulty? Rutika, Shreya, Seva, shall I end the meeting? Hello, are you there? Hello, are you there? Shall I end the meeting?